In this question, you have the ratio of speed of Porsche, Rajdhani, and PMT. Now, considering their names, let's say this is car, this is train, and this is bus. ऐसा दिया है, ठीक है? Now, it says the average speed of car, bus, and train, all three of them, is 72 kilometers per hour. अब यहाँ पे these three are different objects. तो इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस इज सेम और टाइम इज सेम, वो कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. सो एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ वैल्यूज बाय, sorry, average equal to what? Sum of values by number of values. So now, if the ratio is given as 594, आप रेशियो का जो हम लोग के मेथड लगाते थे एक्स अज्यूम करके, तो you can assume the respective speeds are 5x, 9x, and 7x, 4x, sorry, 4x. Okay, now let the speed be, चलो ठीक है, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं और अच्छे से लिख देते हैं. Let the speeds, let the speeds are, ऐसा आपको हम लोग ऐसा assume कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? ओके. नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं. एवरेज क्वेश्चन से एवरेज गिवन टू अस, दैट इज 72 किलोमीटर्स पर आवर. ये हो गया आपका 5x, ये हो गया आपका 9x, और यहाँ हो गया 4x by 3 because there are 3 values here, right? Okay, so you can say this is what? 18x by 3, कैंसिल करो 6, और 6x इक्वल टू 72. अगर आप यहाँ से 6 दूर से ही आप कैंसिल कर देते हो, 6 12s are 72. So you got x, which is a multiple constant here, as 12, through which we can find the value of each speeds. Now question said, find the average speed of car and the train. अच्छा, कार कौन सा वाला है? कार 5, ये जो पहला वाला है, ये कार हो गया, और ट्रेन ये दूसरा राजधानी एक्सप्रेस 9. So we need to find the average of that. So what do we need to find? We need to find the average of car and train, which is nothing but 5x plus 9x by 2. Well, here we have 14x. अच्छा, x का वैल्यू तो हमने 12 निकाला, बाय 2 कर दो, ये कैंसिल होगा कितना? 6. So 14 6 will become 84 kilometers per hour. Correct? Okay, so more than the concept of speed, here we have concept of ratio and the average. So ये क्वेश्चन तो कहीं से भी मॉडरेट नहीं लगता है. Let's mark it easy. Fine. 84 kilometers. Option number B. Let's see the next question.